फिलहाल सीधे चलते हैं शास्त्री भवन, जहां कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। फर्स्ट फेज ऑफ सोलर पार्क्स where nearly 20,000 megawatt of solar generating capacity is going to come up in 34 solar parks in different states in the country. Today the cabinet decided to double the capacity from 20,000 megawatt to 40,000 megawatt of solar parks capacity, and towards that end an additional 50 solar parks will be approved and set up all across the country. Broadly, they will have about 500 megawatt capacity each or thereabouts. In the hilly areas or areas where there is not much agricultural land, non-agricultural land available, we will even approve smaller parks to encourage the widespread use of solar power. The Honorable Prime Minister reiterated his commitment and his government's commitment to promote increasingly the use of solar energy, to promote renewable energy, and demonstrated once again India's commitment towards a better future for the next generation, India's commitment to be a responsible global citizen and fight the adverse impacts of climate change. This policy will also permit the participation of private entrepreneurs who will be selected through a very transparent and equal opportunity policy by the state governments, and we shall be giving a central financial assistance of 20 lakh rupees per megawatt or 30% of the project cost to each of these solar parks, whichever is lower. And this will be monitored and implemented through the Solar Energy Corporation of India under the Ministry of New and Renewable Energy. The one important aspect that I'm sure has caught your attention also has been India's success under the leadership of Prime Minister Modi in introducing transparency in procurement of solar power and scaling up the projects of solar power, which has brought down the solar tariffs to a historic low of 2 rupees 97 paisa in the first year, with a 5 paisa escalation for 15 years thereafter, giving us a levelized tariff of about 3 rupees 30 paisa per unit of electricity, which finally brings India to grid parity with thermal power. In fact, in many cases, particularly for new coal-based thermal plants, even cheaper than coal-based thermal energy. It's a landmark achievement for India. It's a landmark achievement for the success of the solar sector, and it's a landmark achievement for encouraging clean energy and energy security for India. I'm also delighted to share with you that the Cabinet has approved today the investment proposal for setting up Arun 3 hydroelectric project in Nepal by the SJVN Limited, a central public sector enterprise of Government of India, once again demonstrating our commitment to promote clean and renewable energy in India and in the subcontinent in and around India. This project, Arun 3, will generate 900 megawatt of hydropower at an estimated cost of 5,723.72 crore, and the project is expected to achieve financial closure by September this year and be implemented in 5 years thereafter. The project is a run-of-the-river scheme with about 70-meter high concrete gravity dam and headways tunnel of 11.74 kilometers with an underground powerhouse containing 4 generating units of 225 megawatt each. This project was first initiated through an MOU
between Government of Nepal and SJVN in March 2008, when the new government came in, and we found that several such projects were at different stages but stalled and not much progress was happening. We started taking up each of the projects and taking them forward in right earnest, speedily. And I'm happy to say that soon after the new government came in, we signed the project development agreement on 25th November 2014, through which 21.9% free power will be given to Nepal during the entire concession period of 25 years. This will also give employment directly to about 3,000 persons during the construction of the project, both from India and Nepal. This is one more effort to further strengthen the relations between Nepal and India. This is one more significant milestone in the promoting and fostering of better relations with our most friendly neighbor, both from the objective of improving bilateral economic ties, but also from the objective of making Nepal a power surplus state, just like India today is. I'm sure the deep relations that India and Nepal have been able to develop, particularly since the first visit of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to Nepal, has strengthened the relationship between Nepal and India and will continue to strengthen in the years to come. There were a few other decisions taken by the Cabinet which will be uploaded on the PIB site. We have signed an air services agreement between India and Greece. We have done an MOU between India and Australia, which will develop further cooperation with Australia, particularly in the area of aviation security, training, and quality of management of security at the airports. And we have signed an agreement between the Ministry of Agriculture in India and the Ministry of Agriculture of the Republic of Poland on cooperation in the field of agriculture. Before I conclude, I'd just like to add one more element. In the course of discussions of the new solar parks, the Honorable Prime Minister has also discussed at length about how we can take solar energy through distributed generation to the villages of India and to the farmers of India, and help the farmers become self-sufficient and producers of electricity, which will help them further increase their income, further help them improve their productivity, and help them get guaranteed and assured clean energy source of power. And we shall be working towards engaging with the farming community and the agricultural sector to further improve the spread of solar energy in the deep interiors and villages of India. Thank you. Thank you, sir. Any questions? जैसा आप जानते होंगे कि रूफटॉप सोलर मात्र 200 मेगावाट था जब हमारी सरकार 2014 में आई. हमने उस 200 मेगावाट था, उस 200 मेगावाट को बढ़ा के हमने निर्धारित किया कि हम उसको लगभग 40,000 मेगावाट तक बढ़ाएंगे, जिसके लिए अभी भी सरकार की कुछ स्कीमें चल रही हैं, जिसमें हम खासतौर पे सरकारी दफ्तर, सरकारी जो एरियाज हैं, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं पीएसयूज की, इन सब के ऊपर तेज गति से रूफटॉप को प्रोत्साहन दे रहे हैं. वास्तव में आज भी इस विषय पे चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की कि जितने एयरपोर्ट्स हैं उन सब पे तेज गति से हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, उसका बढ़ावा दें, उसके रूफटॉप पे भी, और जो ज़मीन रनवे के बाजू में खाली रहती है उसके ऊपर भी. साथ ही साथ उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि अलग अलग स्थान जहाँ पे बड़े रूफटॉप्स मिलते हैं, एक उदाहरण आया था क्रिकेट स्टेडियम्स का, क्यों ना हम सभी स्टेडियम्स के ऊपर रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहन दें. तो अलग अलग तरीके से सरकार
रूफटॉप सोलर में और तेज प्रगति कर रही है, और अब इस नए कीमत के आधार पे रूफटॉप पे मैं समझता हूं और ज्यादा तेज गति आएगी। पीयूष जी, मेरा सवाल बनारस को लेकर है कि अखिलेश यादव ने कहा कि 24 आवर बिजली, एक सवाल आज कैबिनेट बिजली को लेकर, ये पावर को लेकर है सर, बिजली कैबिनेट ब्रीफिंग है, बाद में बात करें। सतलुज जल निगम का जो प्रोजेक्ट है लग रहा है नेपाल में, उस वहां से इंडिया को कितनी बिजली मिलेगी और किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है? हमारा नेपाल के साथ जो अरेंजमेंट है उसमें कई महीने ऐसे रहते हैं जब नेपाल की खुद की रिक्वायरमेंट कम रहती है, तब ये बिजली भारत आती है। अधिकांश बिजली भारत आके भारत में इस्तेमाल होती है, और इसका लेवलाइज टैरिफ लगभग 4 रुपए के अंदाजा पड़ेगा। लेकिन जब जो 21.9% मुफ्त बिजली नेपाल को मिलेगी, वो नेपाल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगी। सॉरी, जो नेपाल को फ्री मिलेगी उसके बाद जो बचेगी वो सब इंडिया के लिए, वो इंडिया में आएगी। और आप सबने मैं समझता हूं जानकारी ली होगी, जब हमारी सरकार 2014 में आई तब भारत में भी कई प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड पड़े थे। उसमें एक तीसरा का भी बड़ा महत्वपूर्ण सिक्किम में प्रोजेक्ट था 1200 मेगावाट का, जिसमें 9000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन प्रोजेक्ट बंद पड़ा था। हमारी सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो बैंक हो, राज्य सरकार हो, प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स हो, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, सबके साथ चर्चा करके उसको भी सुलझाया था, सब समस्याओं को सुलझाया था। और मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब वो प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का कमीशन हो गया है, उसके चारों यूनिट्स कमीशन हो गए हैं, और सिक्किम और पूरे पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट के एरिया को वो सेवा, उत्तर नॉर्थ ईस्ट एरिया को वो सेवा कर सकेगा, ऐसा पूर्वी उत्तर के भारत के इलाके को वो सेवा करेगा, ऐसा उसका क्षमता अभी बन गई है। So what will be the timeline for tendering out these solar park projects and the ultra mega They are parks? expected Also to the be locations, if you could elaborate on. The solar park policy has indicated that we will approve this 20,000 megawatt of solar parks by the year 2019-20. Sir, there was a WTO ruling on use of domestic equipment in solar power projects. Now that you have expanded the capacity of the solar parks and solar capacity, are foreign companies also going to provide equipment for these projects? Well, I am in continuous dialogue with the manufacturers of equipment, solar equipment in India, and I am happy to share with you that there is now quite a significant interest to set up solar manufacturing in India. अलग-अलग प्रकार से जो लोगों से चर्चा हो रही है उसमें जाहिर हो रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा के प्लांट्स बनाने की क्षमता अब लोग लगाना चाहते हैं। उसमें अधिकांश ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी और जमीन, और हम एक जल्दी एक नई पॉलिसी निर्धारित करके आपके समक्ष लाएंगे जिसमें हम भारत में बनाने के लिए पूरा सूर्य ऊर्जा का सभी रिक्वायरमेंट का जो इक्विपमेंट होता है उसको भारत में बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी लाएंगे। साथ ही साथ एमसिप्स जो कुछ महीने पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स श्री रविशंकर जी प्रसाद जी के विभाग ने एमसिप्स पॉलिसी को और विस्तारित किया था और उसको आगे समय दिया था और पैसा निर्धारित किया था। उसके अंतर्गत भी जो सोलर इक्विपमेंट के लिए सिलिकॉन वेफर्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी उसके अंतर्गत लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ हम उसमें और जोड़ के सोलर इक्विपमेंट भारत में कंपेटिटिव हो जाए मैन्युफैक्चर करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, उसको निर्धारित करने जा रहे हैं। जिस तरह से 2 दिन से लगातार बात चल रही है, एक एनजीओ ने जो रिसर्च की थी वाराणसी को लेकर कि सबसे ज्यादा जो पावर सप्लाई है वो वाराणसी में नहीं है।